आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस वेबिनार सीरीज़ में। बहुत सारे वेबिनार्स हो चुके हैं, हमने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की और शायद बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट है कि हमने कॉलेज या बाकी चीज़ों से भी हमने ज़्यादा पढ़ा। अच्छे-अच्छे टॉपिक्स आए। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार में आज जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज को फाउंडेशन किया। होम्योपैथी के लिए उन्होंने बहुत काम किए और जिनका जो हम बीड़ा उठाए हुए हैं, उन्हीं की बदौलत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के इस वेबिनार सीरीज में हम आपके सामने ला रहे हैं 2 स्पीकर, डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा जिंदल। ये उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं जिनको डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने फाउंडेशन किया था। मीन्स नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली से हैं। दोनों ही लोग एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो और भी अच्छा लगेगा कि एक ही साथ बहुत सारी नॉलेज मिल जानी है। डॉक्टर साक्षी गुप्ता हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। डॉक्टर गरिमा जिंदल हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। तो एक्चुअल में तो इन सबको चलाने वाली डॉक्टर गरिमा ही है, क्योंकि सब सारे एक्सपेंसेस इन्हीं के पास हैं, पूरा भार है। हमारी टीम हमारे साथ है और ये दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं है, ये एक परिवार है और इस परिवार का हर एक बंदा अपने आप में एक काबिलियत रखता है। हर एक की काबिलियत को आपने देखा, कल आपने डॉक्टर श्वेता को सुना जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर वीपी सिंह सर हमारे साथ हर वेबिनार में हैं, ये हमारे इंजन है, पैटर्न है हमारे। इन्हीं की बदौलत हम सब लोग इन्हीं के साथ-साथ चल रहे हैं, बस ये भगा रहे हैं हमें और हम लोग भागते जा रहे हैं। और जितना ये भगा रहे हैं, उतना ही हमें और ज़्यादा भागने में मज़ा आ रहा है। तो हम भी पीछे से अब भाग रहे हैं, तो डॉक्टर वीपी सिंह सर भी आगे से आगे चलते ही चले जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं हमेशा गर्व करता हूँ। डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर श्वेता सब मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं और जितना मैं जानता हूँ, सब इन्हीं लोगों की बदौलत है। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया, वो ल्यूकोरिया है, एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। इंडिया में तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा फिजिशियन हो जो इस प्रॉब्लम को फेस ना करता हो, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा जिंदल दोनों लोग मिल करके देंगे। तो पहले डॉक्टर साक्षी गुप्ता आपको लिकोरे के बारे में बताएंगी और बताएंगी कि एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद डॉक्टर गरिमा जिंदल होम्योपैथिक पार्ट बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आप इन दोनों के बारे में बता दूं कि ये प्रैक्टिशनर हैं दोनों, लेकिन इनके पास हो सकता है कि अभी केसों की भरमार ना हो या कोई बहुत बड़े-बड़े केसेस ना हो, लेकिन इनकी जो नॉलेज है, वही अपने आप में बहुत है। जो भी क्वेश्चन्स होंगे, अगर ये लोग नहीं दे पाएँगे, तो उसके लिए हम हैं, क्योंकि मैं इनका टीचर हूँ, तो ये मेरा काम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बता सकता हूँ। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं आपके लिए जो सॉल्व ना हो। पूरे लेक्चर में मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन्स आपके सॉल्व हो जाएँगे, फिर भी कुछ रहेगा, तो डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा जिंदल इसका जवाब देंगी। अगर नहीं दे पाएँगे तो मैं डॉक्टर वीपी सिंह या डॉक्टर श्वेता सिंह आपको जवाब ज़रूर देंगे। मेरी अभी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं शायद 20-25 मिनट में वापस आऊँगा। इतने सभी लोग कोऑपरेट करिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साक्षी गुप्ता से, प्लीज़ आप शुरू करें और आप दोनों का बहुत-बहुत खैर स्वागत को क्या करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा है और हम सब एक परिवार में बैठे हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकताएँ ज़रूरी हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है दोनों का, डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा जिंदल। डॉक्टर साक्षी गुप्ता पहले स्टार्ट करेंगी। प्लीज़ अपनी स्लाइड शेयर करिए डॉक्टर साक्षी। Thank you, sir, for inviting me once again to this platform. And to all the learners, मैं ये कहना चाहूँगी कि most of us know many things about Leukoria, but मेरा ये purpose रहेगा कि हमारा बहुत अच्छा सा revision हो सके और मैं कुछ नया बता सकूँ. तो let's start with it. So about Leukoria, we know that the discharge per vagina, it is not always pathological. Vaginal discharge hota hai, it is many a times normal also.
लाइक हमेशा हमें हर एक ल्यूकोरिया के केस में कोई बीमारी नहीं ढूंढनी होगी, कोई दवाई नहीं देनी होगी. इट इज नॉट नेसेसरी कि ल्यूकोरिया कोई डिजीज ही हो. विजाइनल डिस्चार्ज हमेशा कोई डिजीज ही हो. लाइक इफ इट इज नॉर्मल, what are the criteria when it is considered normal? Like the discharge would be small in quantity, it would be clear in appearance, and it will not be having any odor, and it will be non irritating. Patient को कोई भी itching, कोई burning sensation, कोई problem नहीं होगी. Small quantity में थोड़ा discharge होगा, and it is normal, and it is required also because it keeps the vagina moist. And basic function क्या होता है? It helps to cleanse the old cellular lining of cervix and vagina. जो भी old cellular lining होती है उसको वापस renovate करने के लिए जो normal vaginal discharge होता है, that is required. And almost all the patients who come to us with this problem of vaginal discharge, unme se 30% cases they have normal vaginal discharge and they do not require any treatment. तो ये चीज हमें पेशेंट को बतानी होगी that this is normal and they do not have to worry about this कि ये कोई abnormal discharge हो रहा है या कोई बीमारी हो गई है हमने. And when it is considered to be pathological, जब वो discharge excessive हो quantity में and it has certain associated symptoms with it, तब हम बोलेंगे कि patient is suffering from a pathological condition. Leukorrhea तब हम बोलेंगे कि एक disease हो गई है. And उसके साथ discharge के साथ जो excessive एक flow होगा, उसके साथ symptoms would be associated, जो कि they can be lower backache, itching, burning sensation हो सकता है vulva में, like without urination or during urination. Patient may encounter some other associated symptoms like poor appetite can be there. The patient may feel discomfort. There will be weakness or pain in both the legs. So when patient is feeling these kind of symptoms along with excessive discharge, तब हम उसको बोलेंगे कि there is some pathology with it. There is leukorrhea. Like it is not a normal vaginal discharge. So अब हमें we have to distinguish like what is normal and what is abnormal discharge. So we should be knowing that normal discharge है तो उसका sources क्या है और वो कैसे बन रहा है, like why it is there. So first of all, the normal vaginal discharge would be creamy white discharge. और बाकी हमने symptoms जो उसके देखे कि there would be no irritation, no other sensation, कोई problem नहीं होगी. And the sources of the vaginal secretion, it can be from the vulva, from vagina, from cervix, or the endometrial glands of the uterus. अब vulva में there are 4 types of cells, 4 types of tissues जहाँ से ये normal discharge हो सकता है. Like that can be Bartholin's glands, sweat glands जो अपनी secretion करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है patient को लगे that there is some vaginal discharge is there. Sebaceous glands का जो secretion होगा उस sebum उसकी वजह से लग सकता है. And again there is skin glands. In the diagram, if it is I guess it is visible, but if it is not, like I'll tell you that skin glands are those glands which are present paraurethral, like it is present posterior to the urethral opening on both the sides. And same is for Bartholin glands, it is present behind the vestibule, like जो हमारी vaginal opening होगी patient की, उसके posterior sides में Bartholin glands present होते हैं. So these are the sources of normal vaginal discharge. और इनमें भी for a quick gist, vagina, the transudate is secreted from the vaginal mucosa. In the form, it is basically watery in nature, and it also comprises of desquamated epithelial cells. जो vaginal walls के cells होंगे, that is also the component of the discharge. Cervix में endocervix is the principal source of vaginal secretions. वहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो major component होता है vaginal secretions का, that is source जो है वो endocervix है, and the cervical glands they secrete thick and viscid mucus. Like जो vagina से अगर secretions होंगे, they are basically watery, and cervix से जो secretion होता है, they are basically thick. And uterus, it although contributes minimally to the vaginal secretions, but yes, it can also contribute. Secretory columnar epithelium जो cells होते हैं endometrial lining में, so that contributes to the vaginal secretions from the uterus. And apart from that, few leukocytes can be present normally in the vaginal discharge, like it does not indicate any pathology. So how does this happens, and what is the basically the vaginal environment जहाँ पे normal
secretions होते हैं and what happens जब ये abnormal बन जाते हैं. Vaginal flora is there, like normally few bacteria are present inside the vagina and they are controlled by the epithelium, their secretions or the female hormones and basically the immune factors of the patient. So इनका एक equilibrium is there which tries and maintain the vaginal environment, जो healthy vaginal environment maintain करके रखते हैं so that no other pathogens grow inside the vagina and जो normal vaginal discharge रहे and the mucosa and everything is normal. So vaginal pH is low, it is acidic in nature, and this prevents the growth of pathogens. Why it is acidic? सबसे पहले जो estrogen hormone है that increases the vaginal epithelial glycogen. Epithelial cells में ही glycogen is present. Estrogen जो है उसे increase करता है and glycogen is then metabolized by the lactobacilli which are already present in the vaginal mucosa. Vagina में already the vaginal flora का part है. lactobacilli सबसे major component है bacterial जो composition होता है vagina का. Glycogen metabolize होता है into lactic acid and that lactic acid is responsible for the acidic pH and this makes the vaginal pH vagina unfavorable for the growth of pathogens. So this is the normal mechanism which is going on, and because of which there is no extra growth or overgrowth of any other pathogens which are unfavorable for the vaginal mucosa. So when it is present normally, there are certain conditions physiological where the vaginal discharge is present normally. There are certain situations, certain conditions, like in neonates and infants it is absolutely normal. But what is the reason? It is because of the maternal estrogen which is present inside the infant body, and it is its action on the vaginal epithelium. It generates the leukoryl discharge, and usually in a month the estrogen gets metabolized. So usually after a month the problem goes away. Then at the time of puberty, it basically hallmarks the impending menarche, like the patient gets to know or the doctor gets to know that the patient now will be attaining puberty. So during this time, the unopposed estrogen activity which has started, it leads to the discharge, and this subsides with the onset of, like, when the progesterone comes into action, this unopposed estrogen activity, it stops, and then the discharge can get normal, like before puberty, before attaining the puberty. And then the third stage would be like in different phases of the menstrual cycle, that we already know that during the ovulation the vaginal discharges they increase, and even during the premenstrual phase, like before menses and mid cycle के time पे vaginal secretions थोड़े increase हो जाते हैं. That is also because of the estrogen activity and other hormonal changes that are occurring in the female body. So this was the third stage, and another physiological condition can be sexual excitement. During that time, Bartholin's glands, they secrete, and that contributes to the vaginal discharge, vaginal secretions. And of course, during pregnancy, it occurs because of the increased vascularity, increased pelvic congestions is there, and hyperplasia, cervical hyperplasia. Because of all these conditions, female can experience increased vaginal secretions during pregnancy. But during these times, we have to assure the patient that this is absolutely normal and they do not require any treatment. कोई treatment की, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है. ये normal है. Patient को हमें ये बताना होगा, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए that they are diseased, कोई बीमारी आ गई है pregnancy में, the female gets worried about it. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. This is absolutely normal. If the discharge is clear, it is odorless, it is non-irritating, then there is no issue with the patient. So we need to assure the patient about this, and there is no need of any treatment. कोई दवाई देने की कोई जरूरत नहीं होती है इसमें. Then what happens during the pathological stage? When the normal vaginal pH it gets disturbed, the estrogen levels they get disturbed. जो normal एक estrogen levels का secretion था normal vaginal flora की वजह से, जो एक acidic pH था, when that gets disturbed, तब we consider this as a pathological condition.
that requires treatment. तब हमें जो है हमारा रोल होगा, तब हमें मेडिसिन देने की जरूरत होगी. The factors that can alter the vaginal environment, like अब ये disturbances क्यों आ गई? There are various factors which can affect the vaginal flora. Like there are certain feminine hygiene products, like tampons are used, or there are sanitary products. So various things are there. If they are not suitable for the patient's body, so they can also lead to the changes in vaginal flora. Then usage of contraceptives, vaginal medications are there, like suppositories that they have to place into the vagina. They can affect the vaginal flora. Usage of certain antibiotics and encounters of an STD, sexual transmitted diseases, they can also lead to disturbance in the vaginal flora and vaginal pH. Like unhygienic intercourse is there, or the patient is having multiple partners, or emotional disturbances and specifically stress. These are the basic factors जिनकी वजह से vaginal pH और estrogen में changes आएंगे, and that will lead to change in the vaginal flora, and they can lead to increased vaginal secretions. Like how much prevalent is this condition? Most of the patients, most of the female patients, they think that now I'm having this vaginal discharge, so it is unhygienic, I'm having certain disease. So 1/3 of these female patients, they usually have this abnormal vaginal discharge, and it can occur, as we have seen, that even in neonates and infants at the stage of puberty, during pregnancy. It can affect female of any age, so it is not any age specific condition. And the patients who are pregnant, they can also encounter this condition due to lower genital tract infection. So these are the certain conditions where the patient can come up with the excessive vaginal discharge or leukorrhea. So it can be vaginitis during the infancy, during childhood, or senile vaginitis, candidiasis, the Candida albans, bacterial vaginosis can be there, trichomonas, mucopurulent cervicitis. It can be because of certain foreign bodies, neoplasm, and urinary or even fecal discharge. So these can be confused, or we should consider in the differential diagnosis while considering a case of leukorrhea. So here we have seen like vaginitis is there, like senile vaginitis is there, trichomonas vaginitis is there, and bacterial vaginosis. So with this, we need to first understand vaginitis or vaginosis में difference क्या है. So vaginitis is basically inflammation. बहुत ज़्यादा significant inflammation होगा vaginal walls का, और इसमें बहुत ज़्यादा number होगा leukocytes, like because it is accompanied with a significant infection in the body, and it is basically found in candidiasis and trichomoniasis. So this is vaginitis. It has significant inflammation. And vaginosis, the inflammation is minimal. Inflammatory response कम होगा, leukocytes भी कम होंगे, but bacterial concentrations बहुत ज़्यादा होंगे. So this is the basic difference between vaginitis and vaginosis, which we have studied. So now starting with those conditions. First of all, vaginitis in infancy and childhood. It can occur because of low immunity. Although normal discharge is there in children, as we have studied earlier, because of maternal estrogen, लेकिन अगर वो problem बढ़ जाती है, like if the child is having the problem of inflammation, तो वो low immunity की वजह से हो सकता है. And जो बच्चे एक छोटे हैं, like up to 5 years of age, they are more prone to this condition. और इसका cause क्या हो सकता है? There can be infection. It can be because of a foreign body or a tumor therein. Now next is atrophic vaginitis, which is also known as senile vaginitis, and as the name suggests, it occurs during the stage of senility, post menopause. Menopause के बाद ये problem आती है. क्यों? Because estrogen levels have decreased, vaginal wall की thinning होनी start हो गई है, acidic environment जो है वो जो pH था acidic, वो अब pH increase होने लगेगा. Like जो acidic एक environment चाहिए होता है vaginal flora को, that is not there as the estrogen has decreased. During atrophic vaginitis, जो discharge होगा, that would be yellow, green, or even bloody. The patient may have itching. It can be painful. The patient might experience difficulty or pain during micturition.
और उसके साथ डिस्पेरूनिया कैन बी देयर, और इवन पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को, बिकॉज वेजाइनल वॉल्स की थिनिंग स्टार्ट हो गई है एंड इट हैज बिकम प्रोन टू ट्रॉमा लाइक कंडीशंस. So this is the condition during atrophic vaginitis. And next is candidiasis. It is basically because of a fungal infection. During this inflammation, the patient will experience कर्ड लाइक डिस्चार्ज. लाइक जो whitish होगा तो पेशेंट हमें आके ये बोलेगा कि the discharge is like curd, whitish है and it is curd like. फंगल इन्फेक्शन के व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, किन पेशेंट्स को ये जल्दी इफेक्ट कर सकता है? लाइक दोस पेशेंट्स हैविंग डायबिटीज, दे आर ओबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफ दे आर यूजिंग मेनी एंटीबायोटिक्स, दे आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, patient is having low immunity, or even during premenstrual period when relatively the immunity is low. So during these conditions, these are the predisposing factors that they might lead to candidiasis. Next is bacterial vaginosis. When the amount of lactobacilli has decreased, like vaginal flora अब alter हो गया है, change हो गया है, तो there would be increased amount of anaerobic bacteria. वहाँ पे anaerobic bacteria ज़्यादा grow करेंगे, और ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा affect करता है who are having low immunity, or the patient might experience fatigue, or they are having frequent sexual intercourse, or they are using vaginal douches. So these are the risk factors or predisposing factors which can lead to the condition of bacterial vaginosis. Although most patients are asymptomatic who are undergoing this condition, but it can lead to a foul smelling discharge. And the characteristic of bacterial vaginosis is that the discharge is fishy in odor. Fishy smell एक आएगा discharge में से patient को, and the smell it usually aggravates after intercourse. This is a characteristic feature of the discharge in the bacterial vaginosis. The other condition is Trichomonas vaginitis, and it occurs because of a protozoa, a parasite. It is usually sexually transmitted, and the discharge which accompanies this infection is yellowish green, or it can be yellowish white. The patient will experience extreme itching. There will be dysuria, dyspareunia, and extensive vaginal mucosa inflammation will be there. And the other feature of the specific feature of Trichomonas inflammation is that the vaginal mucosa will give us a strawberry-like appearance, like measly appearance. As in measles, the Koplik spots are there, like a reddish base is there and white spots are there. So similar is the case with Trichomonas, that the inner lining of the vagina, the vaginal mucosa, will appear like a strawberry. Measly vagina it is known as. Next condition, it is although not very common, but mucopurulent cervicitis, as the name suggests, it is the inflammation of the cervix. There is mucopurulent discharge, and the patient will experience difficulty during urination. The vulva will also get inflamed, and it can be caused by these microbes, Neisseria gonorrhea and Chlamydia trachomatis, or even herpes simplex virus. So this condition can be brought about by these microbes. Now, next cause can be because of the foreign bodies. Foreign bodies can be introduced into the vagina, like it can be from the tampons the patient is using, the cotton wool it gets inserted into the vagina, or the tampons they get retained inside the vagina, or its broken sheath might be there. So these foreign bodies instantly, or even like after the chronic use, they produce very extensive infection, very extensive inflammation inside the vagina, and it leads to copious foul smelling discharge. The significant characteristic after the infection because of foreign bodies is foul smelling. The discharge will be foul smelling, and to bring about the treatment, to bring about the relief in the patient, the first requirement is to remove that foreign body, and that helps to bring the vaginal flora back to the normal state. These foreign bodies can lead to irritation of the organs as well, and it is known as irritant vaginitis, and it can be caused because of these conditions, like if the patient is using hard soaps,
the feminine hygiene deodorants or sprays are there, or the perfume toilet paper they are using, deodorant, tampons, like these are the certain conditions. These can lead to irritation in the vagina and lead to irritant vaginitis. See, other, although it is quite rare, but it can also be the cause. Urinary or fecal discharge can be there, but we need to find out the cause, that it can be because of the fistula. So if the patient is complaining of clear, odorless, watery discharge, so we should first clear out that whether it is because of a fistula, but whether it is the discharge, it might not be because of urine discharge. So, or even the fecal discharge, there can be rectovaginal fistula. Although it is rare, but it can be one of the causes of vaginal discharges. And the other cause, like cervical cancer, most of the patients and many doctors also, they also emphasize over this, like the discharge, if it is very profuse or it is giving very much irritation to the patient, so it can be because of cervical cancer, although it is not that common. But the characteristic feature of this cervical cancer is we have to ensure that the vaginal discharge would be blood tinged. There would be presence of blood, it would be extremely painful for the patient, and of course smell will be there. So these are the certain conditions, these are the certain criteria which we need to fulfill in order to rule out if the patient is suffering from cancer, and the discharge which is appearing, it is because of cervical cancer. So we have the three most common causes of leukorrhea: bacterial vaginosis, candida vulvovaginitis, and trichomonas vaginitis. So we need to differentiate among these three. Like other causes are there, but they are not that common. These are the commonest causes of the leukorrhea. So how will we differentiate among these three? So bacterial vaginosis, the discharge, it will be offensive, and as I earlier said, it will be फिशी स्मेलिंग. जो डिस्चार्ज होगा फिशी स्मेल होगी उसमें, इट विल बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. एंड कैंडिडियासिस में द डिस्चार्ज कैन बी नॉन ऑफेंसिव, उसमें जरूरी नहीं है कि पेशेंट को स्मेल आए. एंड इन द ट्राइकोमोनासिस वेजाइनाइटिस the discharge is offensive, and we differentiate between the bacterial vaginosis and trichomonas by through the smell, that bacterial vaginosis has fishy smell. And apart from that, there would not be much itching and soreness in bacterial vaginosis. So candidiasis and trichomoniasis, they'll have itching, irritation, there would be dyspareunia, and trichomoniasis, there can be dysuria. And other differentiating feature can be in trichomoniasis, the patient might experience slight abdominal discomfort. There would be slight pain in the lower abdomen. So these are the symptoms by which we can differentiate. And about the signs, like in candidiasis, there would be vulval erythema in both of them, but bacterial vaginosis, it can be asymptomatic, so there is not much of inflammation. Vaginosis है, उसमें बहुत ज़्यादा inflammation नहीं है. Bacterial concentration is there, but it has less of the inflammation component. So therefore we'll find erythema, जो redness होगी हमें candidiasis और trichomoniasis में ज़्यादा देखने को मिलती है. There will be absence of vaginitis there. Swelling है, जो भी inflammation के features है, redness, pain, swelling, that would be all present in candidiasis and trichomoniasis, but not of much significant in bacterial vaginosis. Then about the discharge, bacterial vaginosis में discharge है, it would be thin, white, homogeneous. जो vagina और vestibule को एक homogeneous coating होगी, वहाँ पे thin white discharge homogeneous होगा. But candidiasis में it will be curdy, curd like discharge patient को मिलेगा. और trichomoniasis में it will be frothy, yellowish, greenish discharge हो सकता है. But in other two it will be white in color. Apart from that, candidiasis में satellite skin lesions होंगे, like a skin lesion, a patch is there in mid और उसके आसपास छोटे छोटे eruptions बन सकते हैं. It can be present in candidiasis. And again in trichomoniasis, as I earlier said, strawberry, cervix का strawberry हमें measle like appearance से देखने को मिल सकता है. The pH, it would be higher in bacterial vaginosis and trichomoniasis, but it would be lower in candidiasis.
So these are the predisposing factors for all these three, which if avoided can help to prevent the infection. Like in bacterial vaginosis, the patient might be, excessively, she might be douching. Smoking can induce this problem. Use of IUCDs, new or multiple sexual partners, unprotected sexual intercourse can be there, or higher doses of spermicides is used, shower gels, antiseptic agents, and shampoo in the bath. All these can lead to bacterial vaginosis. And in candidiasis, the patient might be on excessive dosage of antibiotics. She's taking diet high in refined sugars. Diabetes mellitus, uncontrolled levels are there. Douching can be there. Local irritants, all the irritants which can produce that vaginitis, which can irritate the area, they can lead to this infection. And similar is the case with trichomoniasis. It is most of the cases, trichomoniasis would be sexually transmitted. Therefore, in the case of trichomoniasis, we should always go for inquiring about the husband as well, or the sexual partner. His treatment also is required in this case. So his complaints, whatever symptoms he is experiencing, or he is undergoing certain treatments, certain issues, they are also required to be taken into consideration. So to get along with the causes, like if we require to, or we wish to know about the causes, हमें जानना है कि क्या problem है, कैसे हुआ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि we need to take proper history, जिससे हमें पेशेंट का सोर्स, जो डिस्चार्ज का सोर्स है, डिस्चार्ज का कैरेक्टर कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो है हमें तभी मिलेंगी और हम डायग्नोज तभी कर सकेंगे जब हम प्रॉपर हिस्ट्री, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ itching, burning, or external dysuria is there, or she is experiencing dyspareunia. So the history which is required, like we need to ask कि पहले कुछ ऐसे episodes हो चुके हैं, ये first time ऐसा आपको experience हो रहा है, पहले भी ऐसी problem हुई है, or was there any history of a sexually transmitted infection, and we need to inquire about her sexual activities, birth control के method कौन से use करते हैं, the menstrual cycle is to be known about in detail, डाउचिंग प्रैक्टिस, एंटीबायोटिक्स, ये सब जो हम एक प्रॉपर केस टेकिंग हम जैसे करते हैं, वो दैट इज रिक्वायर्ड कंप्लीटली इन ल्यूकोरिया केसेस. ल्यूकोरिया के सिम्टम्स जो है वो इतने ज्यादा कभी एक्सेसिव होते हैं और इतने ज्यादा सिवियर होते हैं दैट वी टेंड टू फॉरगेट द कॉज बिहाइंड इट. तो हमें जो, जैसे हम बाकी डिजीजेस के लिए हम कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लाइक वी स्टडी नॉगनॉन दैट सिसाट इफेक्टास, सिसाट कॉजा, हमें कॉज रिमूव करना है तभी हम उसका इफेक्ट हटा सकते हैं. To bring about effective cure in cases of leukorrhea, हमें proper history लेनी है, and these are some of the things which we should consider during case taking of a leukorrhea patient. हमें उसका cause पता चलेगा तभी हम जो है उसको एक permanent satisfactory treatment दे सकते हैं. Otherwise the symptoms, they'll come, the process will go on and so forth. See, so the causes why it persists or why it recur, like हमने treatment कर दिया, ठीक हो गया, and again it is coming. So it should not be the cause. अगर treat हो गया है, कोई complaint problem पूरी ठीक हो गई है, तो वो वापस नहीं आनी चाहिए. उसके क्या reason हो सकते हैं? We have not found out the cause completely. उसका cause नहीं मिला है, हमारे treatment में कोई issue है, या जो predisposing factors है, वो अभी भी persist कर रहे हैं. Like in the trichomoniasis, I said कि we need to check about the sexual partner also. उसको तो disease नहीं है कोई, what are his habits and what are all the complaints he is suffering from. तो अगर वो factor नहीं ठीक होगा तो हम female patient को जितना भी treat कर लेंगे, the problem is not going to stop. वो recur करेगा या persist करेगा. So we need to find out the exact cause behind the problem. The source can be useful in the treatment process. So हमें ये सब जानने के लिए proper एक history लेना बहुत जरूरी है, and we should never forget about the underlying causes. So morbidity, it means leukorrhea अगर नहीं ठीक हुआ, it is persisting, it is recurring, क्या problems हो सकती हैं?
the complications which can affect the patient. Chronic irritation develop हो सकता है, excoriations can be there, scarring can be there. Patient might, usually उसको बहुत जल्दी STD का problem होगा because her vaginal mucosa, it is excoriated, it is लो इन इम्यूनिटीज, तो जल्दी बहुत ही उसको रिकरेंस हुआ करेगा एसटीडी, पीआईडी के चांसेस बढ़ सकते हैं. इन प्रेग्नेंट फीमेल्स लाइक दे कैन बी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, प्रीटर्म लेबर एंड प्रीटर्म डिलीवरी कैन बी देयर. सो ये सब चीजें जो है दे मेक अस रियलाइज दैट लिकोरिया को ट्रीट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सीरियसली उसको कॉजेस के पीछे जाना पड़ेगा, तभी जो है लिकोरिया पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, एंड वी कैन प्रिवेंट दीज फर्दर मोर्बिडिटीज इन द पेशेंट. So here are certain clinical tips like what the patient will say about the complaint she is undergoing, which can help us forming the diagnosis. So to start with, so if the discharge is watery and relatively odorless, so we should first confirm and we should first reassure the patient, and we shouldn't be knowing about that it is not the urinary discharge if the patient is complaining that the discharge is watery and odorless. And secondly, the discharges from the vagina and cervix, they are usually continuous in flow. The discharge, it can be continuous, it can be periodic, it can be intermittent. So if the patient is complaining of continuous flow, we should keep in mind that the discharge is originating from vagina or the cervix. The vaginal discharges, they are purulent in character and they're frequently accompanied by pruritus. तो इससे हमें पता चलेगा कि that can be the source, can be vaginal mucosa. And in cervix, what happens that they are likely to be more profuse before and after the periods. Menses से पहले patient को and after that, अगर profuse हो रहे हैं menses, then we believe that it can be because of cervical discharge. So continuous flow है अगर, तो it can be from vagina or it can be from the cervix, or vaginal cervix discharge को हम इस तरीके से differentiate कर सकते हैं. Next is if the discharges are periodical. पेशेंट सेइंग कि एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो है वापस डिस्चार्ज रिकर करता है, इट कैन बी फ्रॉम अ पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज अराइजिंग पीरियोडिकली. तो कोई अगर स्ट्रक्चर है, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है, स्ट्रक्चर बन गया है, it can give rise to periodical discharge from the vagina. So if the patient is complaining about leukorrhea like 1 day or 2 day before or after menses, it can be because of the hyperemia of the internal genitalia which occurs before the menses. So we need to consider that it can be the physiological condition. If the patient is having a moderate leukorrhea is there which is occurring 1 or 2 days before or even after menses. And if we encounter leukorrhea, if we encounter problem in children, then the most common cause in children is gonorrheal vulvovaginitis. In children, if they are suffering from leukorrhea, the discharge in this case will be profuse, continuous, purulent. बच्चों को होगा सबसे ज्यादा ये कॉमन कॉज रहेगा, एंड इट विल बी प्रोफ्यूज, कॉन्टिन्यूअस एंड पुरुलेंट इन नेचर. और हमें ये जो है गोनोरियल वल्वोवेजिनाइटिस, दैट इज कंटेजियस इन नेचर. तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है दैट this condition, this problem does not spread to other little girls if they are in the vicinity of the patient. So we need to take into consideration this aspect also. And treatment, it would definitely include local hygiene along with the medications. So in the case of CA cervix, cancer cervix, there can be fetid, watery, blood-tinged discharge in the cases of CA cervix. Although in cases of cancer, leukorrhea, it comes late. Earlier, there is no leukorrhea, patient might go asymptomatic, but when leukorrhea appears, so
कैंसर के केसेस में the discharge will be fetid, watery and blood tinged. It usually arises from a necrotic tumor. So the patient will be having bleeding on contact. Like if we need to confirm the diagnosis, there would be bleeding on contact on the affected tissues, and there will be friability on the tissues while palpating. And next is, if the patient is complaining of thick, white, pasty discharge with marked pruritus vulva, patient को thick, white, pasty discharge है and it is accompanied with excessive itching, so we can think of candidiasis. But if that thick, white, pasty discharge is not accompanied by any itching, patient को कोई itching का problem नहीं है, but she is complaining of thick, white, pasty discharge, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल. वेजाइनल एपिथेलियम का नॉर्मल डिस्क्वामेशन होता है, तब भी जो डिस्चार्ज है इट कैन बिकम थिक एंड पेस्टी. So we need to assure the patient about this, but we need to consider again that why is it happening. It does not affect all the females or all those who are suffering from vaginal discharge, but it usually affects those who are suffering from stress, or they are highly emotional, or even oversexed individuals. And again, in this case, they can be helped with local hygiene. So next in the row is, if the patient is complaining of frankly purulent discharge, like pus containing discharge है अगर patient को बहुत excessive quantities में, that can be because of trichomonas vaginitis. Although it can also arise from Skene's duct abscess or a Bartholin gland abscess or a pyometra, we need to consider all these conditions in DD, that frankly purulent discharge, it can occur in both these conditions, but most often, most commonly, it is present in Trichomonas vaginitis. And again, for differentiating from the Trichomonas vaginitis, like if the discharge is arising from the Skene's ducts or the Bartholin gland, it is usually moderate in quantity, like it would not be very much profuse. But Trichomonas के patient में discharge will be profuse. And अगर Skene's duct से है या Bartholin gland से अगर discharge हो रहा है, it would be intermittent in nature. Purulent होगा but intermittent होगा, and it will be moderate in quantity. Trichomonas की तरह बहुत ज़्यादा excessive quantity में नहीं discharge होता है. Where intermittent, it is intermittent क्यों होगा इसमें? It is because of the जो pockets या abscess duct बन गया, एक obstruction बन गई है अगर duct में, Bartholin gland के या Skene's duct में, तो that leads to intermittent discharge. And if the discharge is arising from a strictured cervix with pyometra, if the patient is suffering from pyometra or hydropes of the fallopian tube, hydrosalpinx जो हम condition पढ़ते हैं, अगर वो condition है या pyometra है, cervix stricture हो गया है, then the discharge will be watery, gushing, profuse, and again it would be intermittent because the cervix is strictured. तो strictured या narrowed जगह में से जब भी कोई भी ऐसी condition होगी, तो हमेशा discharge intermittent होगा. That would be because of watery, gushing, profuse and intermittent. Now, how will we differentiate? Like if it is because of the pyometra or hydropes of the fallopian tube, हम differentiate ऐसे कर सकते हैं. Like the patient might be having history of adnexal pain. Patient had adnexal pain बताएगी, and discharge से पहले हमेशा एक adnexal mass feel किया जा सकता है in the lower abdomen. अगर एक mass feel होगा, but after the gush of the fluid, that mass will disappear. So this can help in differentiating the hydrosalpinx from pyometra in this case, if the patient is having profuse, intermittent and gushing discharge. So next is, if the patient is infected with yeast or fungal infection हुआ है कोई, and it is leading to vulvovaginitis in the later months of pregnancy. Later months of pregnancy में, if the patient has encountered yeast infection, if she is suffering from vulvovaginitis, it can lead to thrush in the newborn. This is the suggestive image of the condition in the newborn. अगर उसको vulvovaginitis हुआ later months में pregnancy के, तो
बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इस कंडीशन में पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगी? शी विल बी सफरिंग फ्रॉम वल्वर इचिंग, मॉडरेट ल्यूकोरिया होगा, बहुत ज्यादा गशिंग, बहुत प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया नहीं होगा, इचिंग होगी मगर, and it becomes more probable if the vagina is found to be inflamed and the discharge is strongly acidic in reaction. This will help us to differentiate this condition from other conditions. Inflammation होगा, discharge acidic होगा, and the patient will be having itching, but leukorrhea का जो discharge है वो बहुत ज्यादा quantity उसकी बहुत ज्यादा नहीं होगी. So this can help us to move towards the diagnosis of yeast infection or the fungal infection. And in case a patient complains of a stringy discharge, like if the patient is complaining of a mucus discharge or is there mixture of mucus and pus, it is characteristic of cervical discharge. तो हमें ये source पता लग सकता है कि अगर mucus और pus का mixture है और it is only mucus, patient बता रहा है stringy है discharge, तो वो cervical उसका origin हो सकता है discharge का. Next in the row is in the case of trichomonas vaginitis, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, हमने ये पढ़ा. इट कैन बी मोस्टली जो है उसका कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ contamination of the vaginal mucosa or the vulva by fecal contents where trichomonads are frequently found. या फिर if the husband of the patient is harboring trichomonads in his urethra or prostate, then again it would be transmitted sexually to the patient. Now, this condition would be characterized by pruritus vulva. Patient will complain of itching. There would be continuous, profuse, foul, frothy, greenish discharge. The discharge will tend to be profuse after menses. ये हमें differentiate करने में help करेगा कि menses के बाद हमेशा discharge profuse हो जाएगा और next cycle आने से पहले उसकी quantity भी कम हो जाएगी. It will be less purulent and it would become thicker. मेंसेस के जस्ट पहले इट वुड बी प्रोफ्यूज और नेक्स्ट आने से पहले इट वुड बी थिकर एंड लेस पुरुलेंट. एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन there would be soreness and tenderness along with swelling of the external genitalia. The vulva would be bathed in pus. बहुत ज्यादा purulent discharge है, बहुत ज्यादा pus का formation होगा, तो if the patient is examined तो हमें वहाँ पे pus का content देखने को मिल सकता है. The introitus, labia minora, vagina and cervix, all the structures are completely inflamed. And again जो हमने पहले पढ़ा था, there would be strawberry or measly appearance of the vagina. It would contain pinhead size को मिलेंगे और उसके आसपास इन्फ्लेम्ड होगा, बट स्ट्रॉबेरी एक लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकता है ऑन द सर्विक्स एंड ऑन द वेजाइनल म्यूकोसा. Like it means after menopause, it is basically characterized by alkaline discharge, which is moderate in amount and purulent. The vulval and vaginal tissues are sensitive and inflamed. Senile vaginitis कोई गशिंग नहीं, कोई प्रोफ्यूज डिस्चार्ज नहीं इन नेचर, बिकॉज ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो डिमिनिश हो चुकी है. तो देयर द वेजाइनल फ्लोरा इट हैज ऑल्टर्ड. अब वहां पे एसिडिक नेचर नहीं रहा है, तो जो डिस्चार्ज है दैट वुड बी अल्कलाइन, मॉडरेट होगा. if the uterus is retrodisplaced, retro position है अगर uterus का, तो it is usually congested and boggy in nature. So if the patient is presenting with retrodisplaced uterus and she encounters endocervicitis, then we can expect more discharge than it would have occurred if the uterus was in upright position. एक normal antiflex position में जो uterus होता है उसके comparison में retroflexed uterus में ज़्यादा discharge देखने को मिलेगा if the patient is suffering from endocervicitis. These are the certain examples of the conditions कि हमें किस तरीके के discharge में क्या हम condition
अपने दिमाग में सोच सकते हैं that for differential diagnosis, like if the patient is suffering from mucoid and blood tinged discharge, so it can be because of endocervical polyp. Profuse watery discharge है without any mucoid element, it can be because of a urogenital fistula. Clear discharge है, slight bloody secretion है, but it is after hysterectomy, तो we can consider about the granulation tissue formation और उसकी वजह से वो discharge हो सकता है. अगर patient को बहुत heavy vaginal discharge हो रहा है, we can keep in mind that it can be because of benign tumors. Frank bleeding है तो it can be because of a malignancy. Purulent discharge can be because of bacterial infections. So these are basically the certain things which we can keep in mind while the patient is narrating their complaints. So if the patient is coming to us or to advise the patient, like how can we prevent the future infections? How can the patient take care for her vaginal health? Like she needs to take care of routine cleanliness. Cotton innerwear should be used, and any nylon or tight pantyhoses, they should be avoided. Douching should be avoided. Irritant chemicals should be avoided to the great extent as they can be avoided. And the patient, they should keep in mind to perform safe sexual practices. And of course, general health care is required because the patients who will be having lower immunity, they would be very much affected or very much prone to having these kind of infections. So if the patient, they keep in mind these all these things in their mind, they can prevent future occurrences or even future recurrences of their vaginal infections. So this was it. I guess I could make a revision of it, or I could give something new. कुछ आपको इसमें से कुछ नया अगर मैं दे पाई हूँ तो that would be really great for me. Thank you, Sakshi. It was a very wonderful explanation. And now I'll request Dr. Garima Jindal to start her session. Ma'am, please start the screen sharing. Yeah. Sakshi ma'am. डॉक्टर साक्षी, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने सारी चीजें क्लियर कर दी. सभी कुछ ठीक है. मैं चाहता हूँ कि इस पे और अच्छा सा काम करो. अगली बार जब आप इस पे लेक्चर दोगे तो हमें बताओगे कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेस हैं. आपने एक वर्ड यूज करा, जो स्ट्रेस हैं वो लिकोरिया को जन्म देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्ट्रेस है जो इससे पॉइंट आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगली बार इस पे लेक्चर होना चाहिए. डॉक्टर वीपी सिंह सर भी कुछ कहना चाहते हैं. अभी जो भी क्वेश्चंस हैं डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर गरिमा के साथ एक बार दो बार सब लोग साथ में डिस्कशन करेंगे. पहले डॉक्टर गरिमा जिंदल बोलेंगी. डॉक्टर वीपी सिंह सर. डॉक्टर साक्षी, बहुत अच्छा बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो. और आपने पूरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इसमें रख दी है, लिकोरिया. जबकि पहले तो आपने बोला था कि कोई डिजीज नहीं है. वाकई डिजीज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के वे से लेडीज के लिए बहुत बड़ा महत्व की चीज है. तो इसके लिए हमको इसको माइंड में रखना चाहिए. आपने कई बार कहा है कीप इट इन योर माइंड. तो ये बहुत जरूरी चीज है. बहुत अच्छी तरीके से आपने लिकोरिया को बहुत अच्छी तरह समझाया है. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पढ़ाने के लिए. बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने. Thank you, sir. Thank you. Now, Dr. Garima, it's your turn. कि होम्योपैथी क्या है? I'm starting. जी सर. Thank you, Dr. Sakshi. आपने बहुत अच्छा explain किया लिकोरिया को आज clinically. So now we will take forward to the homeopathic approach of licoria. Ma'am, please start the slide. Yes. So like many people were asking in the chats when we will have the homeopathic approach to licoria. So today we will discuss according to Organon, repertory and materia, what are the various Dr. medicines. Garima? Yes, ma'am. Visible है आपको screen? Hello. Yes. Okay.
Okay, so now we will look forward to how, according to Organon, Repertory, and Materia Medica, we can treat the condition which when becomes pathological, as said by Dr. Sakshi. Next slide, please. Next slide, please, ma'am. Okay, next, in the next slide, I have started with the case taking. When a female approaches to us in our clinic, how to start with the case. In the footnote of 1094, Dr. Hanneman has given us various guidelines how to approach, how to take the female's case. So whatever may be the complaint, the menstrual and the gynae and obs history is very important for us. So it says, in chronic diseases of females, it's especially necessary to pay attention to pregnancy, sterility, sexual desires, miscarriage, suckling, and the state of menstrual discharges. To further which he explains, menstrual discharges. With respect to the last named, more particularly, we should not neglect to ascertain if it occurs as to short intervals. Like we need to know the duration of the menstrual discharges, of what intervals they are occurring. Are they delayed or they are coming beyond the proper time? How many days they last? Whether the flow is continuous or interrupted? What is the general quantity? How dark is the color of the discharge? Whether there is leukorrhea before its appearance or after its termination. As we already studied that a slight discharge before and after menses is physiological because of the alteration of the estrogen. So we need to ask if there is presence of white discharge, and what are the bodily ailments and mental ailments, what sensations and pains the female feels if there is leukorrhea. What is, and ma'am, the slide sharing has stopped. Okay. So if we find, if the patient agrees to that, if she's suffering from leukorrhea or she's facing white discharge, so we need to further inquire what is the nature, what are the sensations she's attending with the flow, in what quantity it is. As we know, a slight discharge is normal, so we need to inquire for the quantity, kitna discharge that she is experiencing, and what are the conditions and occasions under which it occurs. So before proceeding to any diagnosis or any medicine, we need to ask all these questions so that we are very clear with the picture to make the diagnosis of the condition, whether it is pathological or not, whether it is physiological only, and can be treated without medicine just by maintaining proper hygiene and the management as told before. Next slide, please. Case taking. As explained, I already explained it. We need to inquire about the menstrual cycle and the days it lasts. If it is normal, like 28 to 35 days, we take it as normal. If it is regular or not, if the flow is regular or not. Next slide, please. Okay, now we talk about leukorrhea. Leukorrhea, what is its nature? If it is acrid or bland, if it is corroding, excoriating, these are various words we usually use, or if it causes itch or not, if it is sticky or not, if it stains or not. These are all defined under the nature of the discharge. Next is what sensation attends its flow. Like if there is a tickling sensation, if there is a running down sensation patient is feeling while the discharge is there, and in what quantity it is. If it is in small amount, if it is a huge amount, what is the quantity discharge is releasing, and what are the conditions and occasions under which it occurs. Like what are the peculiar situations when the particular female experiences this discharge, either it is before menses or after menses or the 14th day of the cycle.
By this, we will be getting the proper diagnosis and will be able to go to the medicine. Next slide, please. So we study about the character of the discharge, which include amount of the discharge, color of the discharge. Color of the discharge tells us a lot about what is actually the condition and what remedy is to be given. As we already discussed, that color of the, if the discharge is transparent, so it might be physiological only, or it might be related to some disease. And there are various colors: transparent, yellow, green, black. So these are to be asked and taken care of. Next is consistency. If it is very thick, if it is thin, watery like, starchy, rice water like, these are various consistency the patient will tell us about. Next is acridity. Either the discharge will be acrid or bland. It will not be corroding, it will not be irritating. Position. There are various terms which patient tell us that we have discharge only while walking, only while lying down, or we feel better while sitting. So the position of the patient also matters to the discharge and help us to guide towards the right medicine. There are discharge which doesn't cause itching or pruritus, but there is discharge, there are conditions in which there is severe itching, and itching that can be maybe at the time of night or in the daytime. So time modalities are also to be asked. And one more thing is odor. Sometimes the discharge is odorless, which is mostly physiological. But if there is odor of any kind, that is to be inquired to get through the conditions and the medicines. Next slide, please. Okay, color. As we discussed, these are the rubrics we can find directly in the Kent's repertory under the head rubric leukorrhea. These are sub rubrics under that. Like if the color is transparent, we have borax, natrum mute, sepia as the first grade medicines. They work really well. As we read in under borax that it has transparent transparent discharge before the climacteric, before the menses. And in natrum mute, patient is extremely weak, but the liquid is transparent. If the color of the discharge is cream-like, we have single first-grade medicine, that is pulsatilla. Second is, if the color is yellow, we have arsenic, calcarea, chamomilla, hydrastis, which is like very important, creosote, sepia, and sulfur as the first-grade medicines. If the color of discharge is green, we have carboveg, mercurus, natrum mute, natrum sulf, nitric acid, and sepia. What if the discharge is gray? We have argentum metallicum in second grade. For the bluish discharge, we have single medicine ambra. And if the color of the discharge is brown, we have lilium tick and nitric acid in first grade. If the color of the discharge is black, we have crocus and sea kale. And finally, if the color of the discharge is white, we have borax, graphitis, natrum mute, and sepia as the first grade medicine. Next slide, please. Consistency, as we talked about. If it is ropey, stringy, tenacious, patient will tell about that the discharge is very thick, it hangs down, it is very sticky. So we have hydrastis, Calibyke, nitric acid, and sabina as the first grade medicine according to the Kent's repertory. Sometimes the patient tells us that it is boiled, starch-like, chawal ke pani jaisa, riced water. So we have medicines borax, natrum mute, and sabina. Patient may complain that it has discharge which is very thick. So we have medicine arsenic, calcarea, hydrastis, and Calibyke. Consistency can be as a paste, like a curdled paste or white in color. So we have single medicine borax. And the discharge can be thin and watery, which covers the medicine graphitis, nitric acid, and pulsatilla. Next, please. According to the pH, it is a major differentiating thing we can ask the patient, that if the discharge is acrid or bland, if it is irritating or non-irritating. Things become simpler when it is non-irritating, that is bland. So we have alumina, colophyllum, mercurus, pulse, sulfur, and thuja.
But for acrid, we have a huge sphere of medicine, so we need to go further to inquire the other conditions and go to the right medicine. Acrid condition includes alumina, arsenic, borax, chamomilla, ferrum group, fluoric acid, graphitis, creosote, lycopodium, mercurus, nitric acid, phosphorus, pulsatilla, sepia, and silesia. These are all the remedies which work in the acrid conditions of leukorrhea. Next slide, please. Odor. Sometimes the discharge is odorless, but if there is odor, we need to ask the patient to be very specific about what kind of odor is she experiencing. If it is an ammonical odor, so the single remedy is ammonium carb. And if the odor is cheese-like, old cheese-like, so the medicine in first grade is Hepar, and the medicine in second grade is Sanicula. In fish brine-like odor, we have just single medicine, Sanicula, which is like very weak patient. And in the fourth thing, green corn-like, we have single medicine, creosote. Creosote is very frequently given in green corn-like leukorrhea whenever the patient complains of. And in pungent discharge also, creosote is a single medicine. If there is putrid odor, so carbolic acid, colchicum, kali ars, kali iode, kali phos, and again creosote, lachesis, muriatic acid, natcar, nitric acid, phosphoric acid, sorinum, sabina, CKL, and sepia shows us good results. Next slide, please. Position. As I talked before, there are conditions in which the discharge aggravates during walking. So we have remedies covered under that are Aesculus, aluminium, aurum, bovista, calcarea, carboanimalis, graphitis, creosote, lacan, magmure, natramure, phosphorus, sarsaparilla, sepia, strontium, sulfur, and tuberculinum. The condition in which the discharge aggravates while lying, we have single medicine, pulsatilla. Patient is better while walking and doing other work, but whenever the patient lies, the discharge aggravates. Discharge while sitting, leukorrhea while sitting is antemtard, and leukorrhea only while standing, aggravates while standing is arsenic, carbonimalis, creosote, and lacanum. Next. Time modalities. There are various times when patient says कि डे टाइम में aggravate है, नाइट में ठीक रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we have medicines alumina, lacan, platina, and sepia. There are conditions when patient just says only discharges only in the morning and no other time. That is aurum met, belladonna, calcarea phos, carboveg, graphitis. But the only first grade medicine is sepia. Discharge only in afternoon is alumina, calcarea phos, lilium tick, and naja. Discharge which comes only in the evening time or aggravates in evening is bufo, lilium tick, mercurus, and which aggravates at night. We have first grade single medicine is mercurus. Other medicines are there in second grade that are carboveg, causticum, conium, and natrum. Next slide, please. Now we will study some remedies which are very frequently prescribed for the discharges. So first is alumina. Alumina is given for severe burning, itching in the genitals. It is the topmost remedy which gives good result. The main symptom that guides us is it is used very frequently when the discharge is acrid and transparent that causes burning and itching of the genitals. The discharge in itself is acrid, and when it gets associated with the skin, vulval region, it causes burning and itching there. And a peculiarity is patient will say that it gets better after washing with cold water. Whenever the patient washes it with cold water, it feels better. And another indication whenever alumina is used in leukorrhea is that the discharge is very profuse, so profuse that it runs down to the heels, as mentioned in Allen's. The complaints of vaginal discharge is worse during the daytime and especially after menses. In daytime, patients feels the discharge is too much, very weak and lethargic, and after menses also. And the patient is very weak physically and mentally after menses.
And a constitutional symptom of illumina is given to the patients who suffer from chronic constipation and go without stool for passing stool for many days. Next slide, please. Ma'am, next slide. We have Calcarea carb for the milky and the vaginal discharge with itching. Leukorrhea getting worse from exertion or when urinating is a strong indication towards use of this medicine. These homeopathic medicines bring about good results, especially in little girls who perspire excessively on head. That is, we already know, is a constitutional symptom of Calcarea group. And physically, the patient is fair complexion and obese. And there are other things we can confirm for Calcarea carb, but the peculiar thing is it has milky vaginal discharge with itching. Next. A very good remedy for leukorrhea, for ropey and stringy tenacious mucus-like leukorrhea, which hangs down from the os, as we read in Allen's. So it has a thick yellow vaginal discharge with excessive itching. Itching is always felt and discharge is worse immediately following menses with lots of weakness. The patient is very debilitating and the discharge is albuminous, accompanied with great sexual nisus and severe pruritus immediately after menstruation. And a strong feature of this medicine is that there might be some kind of liver complaint or constipation in the women along with the leukorrhea if we are differentiating this with other remedies. Next. Creosote. We have seen it in single medicine in so many rubrics. So for the offensive and vaginal discharge with violent itching, creosote is the best medicine, very offensive and acrid, causing violent corrosive itching of the genitals. The vaginal discharge is yellow and always leave a stain on the linen. The condition gets worse between the periods. Standing makes the discharge worse and patient feels better while sitting or lying down. Whenever the patient is walking or standing, the condition is worse, but as soon as the patient lies down or is sitting, patient feels better. So creosote is a remedy. And every little exertion throws her into a profuse sweat, white, painless leukorrhea, smelling like fresh green corn, flowing like the menses, with pain in back and flushes of heat in the face. These are some concomitant symptoms we will get if the remedy is creosote. Green corn-like symptom is corn-like smell is very particular about this remedy. Next. Next is natrum mure. Next is natrum mure. For thick vaginal discharge, which get worse while walking, just like creosote. Natrum mure is a very good remedy. It has thick, white, and transparent discharge, which gets worse on walking. The discharge is acrid with itching and smarting of the vulva. It might be yellowish or greenish in color, but especially while walking and in the morning. Contractive pain in the abdomen usually accompany leukorrhea. This is like a differentiating symptom of natrum mure, and the women who require this medicine are mainly anemic or very weak and they cannot bear heat of the sun. Next. Nitric acid, a syphilitic medicine. It is syphilitic ulceration with tendency to rapid destruction of the tissue. Grayish or greenish in color discharges are there and which are very offensive. It is like corroding the lining of the tract. Pruritus occurs in evening and sometimes when walking. The sensation feels like stitches in the vagina which are shooting upwards. Cold aggravates the pruritus and the leukorrhea. Feels as if there is violent pressure and everything is coming out of vulva with pain in small of back, through hips and down the thighs. And it has swelling of the inguinal glands. Next slide. So the last medicine I have covered in this presentation is sepia. Sepia is a remedy we give for menopause, like the senile vaginitis which ma'am talked about. Sepia is the best medicine when the patient is suffering from menopause with excessive hot flushes, perspiration and weakness.
This medicine is beneficial when the discharge is yellowish green in color with excessive itching of the vulva, and the patient also complains of bearing down sensation in the pelvis, as if the pelvic organ would come out of vulva. And the women, we already know, usually require this medicine when they are suffering from menstrual irregularities of various kinds, and the mental condition of CPI is like she's indifferent for family and friends and she is irritable. Thank you. That's all I could do in therapies. I know there can be many little things to be added. So please, can you take over? डॉक्टर गरिमा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा मेडिसिन को। थोड़ा सा और इलैबोरेशन करना है नेक्स्ट टाइम, और सब लोग ऐसे ही शुरू करते हैं। ये जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन आए। आपके कॉलेज में भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीखें कि आगे आगे प्रेजेंटेशन कैसी देनी है। आपने स्लाइड्स बहुत बढ़िया प्रिपेयर करी हैं, खासकर जब एफोरिज्म के बारे में समझाया, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। डॉक्टर श्वेता, किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करिए। हेलो जी, पादन सर। जो भी किसी के क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करिए। If anyone भारत भूषण कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप देख लीजिए। बाकी इतने में आपको, आप डॉक्टर श्वेता इतने कलेक्ट करिए क्वेश्चंस को। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों लोगों ने जो भी बातें बताई हैं वो हम सबको याद रखनी है। डॉक्टर साक्षी ने बताया कि जो डिस्चार्जेस हैं वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या नहीं देना है, कैसे मैनेज करना है। इंडिया में जब हम बात करते हैं अनहाइजेनिक कंडीशंस की, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इवन जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, यहाँ तक भी दिक्कत है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोअर कैटेगरी में ऐसा होता होगा, मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और कोई भी ऐसा फिजिशियन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स डिस्चार्जेस को लेकर के आती हैं। जब मैं मेंसेस के या डिस्चार्जेस की या फीमेल की कंडीशंस की बात करता हूँ, तो 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना कि 3 जगह क्या-क्या हो रहा है। नंबर 1 बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस और आफ्टर मेंसेस। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत आराम से मिल जाएगी। और ये 3 ही फेज हैं जहाँ फीमेल की पूरी केमिस्ट्री, हार्मोन्स को लेकर के या बाकी सब चीज़ों को लेकर के गवर्न होती है। जो डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ही पिक्यूलियर हैं। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक डिस्चार्ज की अलग-अलग डेफिनेशन देता है, अलग-अलग डिस्चार्ज की एक अलग-अलग मेडिसिन देता है। वरना पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये बताए कि ग्रीन कलर के डिस्चार्ज के लिए ये मेडिसिन, ब्लू कलर के डिस्चार्ज के लिए ये मेडिसिन, और अगर व्हाइटिश ब्लू हो तो ये मेडिसिन। तो हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन सिर्फ होम्योपैथी में है। इससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि होम्योपैथी की उस जड़ तक पहुँचे। सेम ऐसी इन डिस्चार्जेस में जो लिकोरिया के बारे में आज बात हुई है, हमें जड़ तक जरूर पहुंचना है। स्ट्रेस जो है वो पता लगानी चाहिए कि क्या स्ट्रेस है, क्यों हुआ, क्यों फीमेल उससे ग्रसित हुई, कोई एनीमिक फैक्टर तो नहीं है, या कोई अनहाइजीनिक कंडीशन तो नहीं है। अगर अनहाइजीनिक है भी तो बताना चाहिए फीमेल को। एक जो हमें सबसे ज़्यादा इशू लगा वो नैपकिन्स को लेकर के भी पता लगा। हमने बहुत सारी फीमेल्स को करेक्ट कराया था और डिस्चार्जेस बहुत कम हो गए। तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक फिजिशियन को हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये डॉक्टर हैनीमैन भी कहते थे, चाहे वो नॉलेज ऑफ डिजीज़ हो, चाहे वो नॉलेज ऑफ मेडिसिन हो, चाहे वो डिजीज़ के इंडिकेशन हो। वो बताते थे कि नॉलेज ऑफ डिजीज़ और उसके इंडिकेशन, उसका मतलब ये था कि उस डिजीज़ में क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जो ठीक होने लायक हैं और जो ठीक होने लायक नहीं हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमेशा घूमते रह जाते हैं। डॉक्टर श्वेता, यस सर। क्वेश्चन पूछिए। सर, डॉक्टर अनूपुर शाह का क्वेश्चन है कि यूट्रस इज आल्सो नोन एज हिस्टीरिया, सो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन हिस्टेरिकल अटैक और मैनिया विद यूट्रस? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साक्षी या डॉक्टर गरिमा, कौन बताना चाहेगा?
देखिए, जहाँ तक टर्म की बात है तो दोनों ही टर्म अलग अलग हैं। एक साइकोलॉजी से रिलेट करती है, इन दोनों को कंफ्यूज मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। और जो हिस्टीरिया यूट्रस के लिए टर्म यूज की जाती थी वो बहुत हिस्टेरिक एंशियंट टाइम में थी, आजकल यूज नहीं की जाती है। बहुत सारी मैथमेटिक्स में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत पुराने हैं। आजकल इन दोनों कैटेगरीज को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है। एक साइकेट्रिक है और जो दूसरे वाला हिस्टीरिया जो यूट्रस के लिए बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात होगी। और कोई क्वेश्चन? सर, डॉक्टर उर्दूज का क्वेश्चन है कि यूरिया एसोसिएटेड। डॉक्टर उरुज ने लगता है कि जो डॉक्टर साक्षी ने बताया वो पूरी तरह से सुना नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम इसको जब YouTube पे जा डालेंगे तो दोबारा से एक बार सुनिए। और डॉक्टर साक्षी ने इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि फिजियोलॉजिकल क्या होता है, पैथोलॉजिकल क्या होता है। यस सर। और कोई क्वेश्चन है डॉक्टर श्वेता? नो फर्दर। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। Am I audible? नो डॉक्टर श्वेता, आप की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और कोई क्वेश्चन है नहीं। डॉक्टर भारत भूषण ने 2 क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, लेकिन क्या क्वेश्चंस हैं ये नहीं पता। आप लोगों को बता दूं कि कल हमारे पास डॉक्टर कमलेन त्यागी हैं, ये PhD है मैथमेटिका से। कल इनका लेक्चर है सेम टाइम पे 9 बजे। HOD हैं ऑप्शन गायनी डिपार्टमेंट के, होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। तो सभी लोग, हम आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आपके पास ईमेल और व्हाट्सएप पहुंच जाएंगे। तो कल हम लोग फिर से 9 बजे मिलेंगे। इतने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमें अपना फीडबैक दें। फीडबैक के लिए हमने पहले भी आप सब लोगों से एक छोटी सी वीडियो मांगी थी, 1 या 2 मिनट की। जो भी वीडियो आप DHMA के लिए बना सकें हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि सब लोगों को DHMA के बारे में पता लगना चाहिए। जो भी फीडबैक हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, हम लोगों को और क्या सुधार करना चाहिए ये भी आप हमें बताइए। 9711153617 पर भी हमें बता सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सभी अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर ईमेल है dhmadelhi@gmail.com। कोई और भी सजेशंस हो तो प्लीज़ दीजिएगा। मेंबरशिप के लिए भी dhma.in वेबसाइट जो है हमारी, उस पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं चला सकते लेकिन चाहते हैं कि मैं DHMA की मेंबरशिप लें, तो वो मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कभी भी। हम हमेशा हाजिर रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज इन दोनों डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा जिंदल के लिए हमारे पैटर्न सर डॉक्टर VP सिंह, इनका धन्यवाद करें। और हालांकि हम सब एक परिवार हैं और धन्यवाद स्वागत हम लोगों के बीच में चलता रहता है, लेकिन फिर भी औपचारिकता हमारे पैटर्न सर ने हमें सिखाई है कि ये जरूरी है कि इस समय दोनों लोग स्पीकर हैं, तो हमारे लिए यही बड़े हैं। डॉक्टर VP सिंह सर। औपचारिकता नहीं है डॉक्टर दीपक, ये जी बहुत अच्छा, आज इन दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी रही। जी और इस तरह की जोड़ी बना करके काम करेंगे तो हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं लोगों को आगे ले जाना है इस चीज को। जी तो सर। आज बहुत खुशी हुई और दोनों बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोले। और डॉक्टर गरिमा का बहुत अच्छा लेक्चर। एक्चुअली मैथमेटिक्स साथ जो इन्होंने ऑर्गेनन को जो जोड़ दिया है, एफोरिज्म 94 को, डॉक्टर हेनीमैन ने भी इसका जिक्र किया है। अब ये लगाई 94 को ढूंढने में डॉक्टर गरिमा को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अदरवाइज जो उधर उन्होंने फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ा दी, इधर ये मेडिसिन लेकर के बैठ जाती सिर्फ। लेकिन बहुत मेहनत इन दोनों ने की है, बहुत अच्छा दोनों का रहा। और एक्चुअली केसेस आते हैं, हम लोग ये भी कह देते हैं कि दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन लेडीज ना एक्चुअली हमारे पीछे पड़े, नहीं डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ, कमजोर होती जा रही हूँ। तो इसलिए होम्योपैथिकली ये बहुत अच्छा है आपके प्रैक्टिस बढ़ाने का। और एक लेडी अगर ठीक हुई तो 4 लेडी वो अपने पास आपके पास भेज देगी। तो बहुत ही अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा लगा। DHMA आपका बहुत बहुत कृतज्ञ है, बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों के लिए, बहुत थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो हमें बताइएगा। ये जो शो है ये फेसबुक पर भी लाइव हुआ है, आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साक्षी और डॉक्टर गरिमा अपने आप लोगों को जवाब दे देंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों स्पीकर्स का, डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर गरिमा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना में आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मुझे पता है कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को और आगे ले जाने वाले आप ही लोग हैं। तो बस कीप कंटिन्यू और खूब मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।